Hello students, मेरा नाम है नीलय पारेख. In previous video, we understood the introduction of computer programming, why it is necessary to learn this computer programming being computer and IT engineer. Today, we are going to discuss about why this language, C language, is called middle level language. So basically the question is that it is not a high level, not a low level, but why it is called middle level language? So C language supports both features of high level language as well as low level language. Okay, now the question is that which features of high level and which features of low level. Now high level language, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है that is called reusability, जो आप उसे बार बार यूज कर सकते हो. दूसरा मॉड्यूलरिटी, कि आप बड़े से प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, सॉल्व करो, वापस इकट्ठा करो, वो सपोर्ट करता है. यही फीचर्स सी लैंग्वेज में भी पॉसिबल है, इसलिए वो हाई लेवल लैंग्वेज के इस फीचर्स को सपोर्ट करता है, यानी उसे हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाएगा. नाउ which features of low level language? About low level language, pointer concept, you can access direct memory location of that particular thing. ये फीचर है लो लेवल लैंग्वेज का जो C लैंग्वेज सपोर्ट करता है. इसी वजह से उसे हाई लेवल लैंग्वेज, लोअर लेवल लैंग्वेज नहीं कहा जाता, लेकिन क्या कहा जाता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मिडल लेवल लैंग्वेज. Yes, our answer is simple. It supports both the features of high level language as well as low level language. That's why it is called middle level language. The second topic of today's video is that the advantages, the features of C programming. The first advantage of C programming is that portable. मतलब कि क्या? If I am making a code on one system and which is executable on another system, it is called portable. मतलब कि क्या, कोई एक सिस्टम है जिसमें मैं अपना कोड बना रहा हूं, वही कोड अगर दूसरे सिस्टम में भी चल रहा है तो यस, इट इज कॉल्ड पोर्टेबल लैंग्वेज. सेकंड इज मॉड्यूलरिटी. मींस व्हाट? बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल में सॉल्व करने का फीचर्स सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है. देन C support various types of data types. With the help of this data type, you can solve lots of complex problems as well as programs. Then there are 32 keywords which are very useful in making program, और वो आसानी से आप याद कर सकते हो. And the most important thing about C language is that वो beat operator को support करता है. Generally high level language में ये फीचर्स पॉसिबल है नहीं, लेकिन हमने अभी जस्ट डिस्कस किया सी लैंग्वेज सपोर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स. इसीलिए जो लो लेवल लैंग्वेज का फीचर्स है बीट ऑपरेटर, वो ये सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है. तो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज. तो आज हमने दो टॉपिक के बारे में बात किया. एक, व्हाई सी लैंग्वेज इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज एज वेल एज the features of C language. तो अगले वीडियो में हम कुछ और ऐसी बातें करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.